26. That's us. Enzo murmurs in my ear. He reaches for my hand and we get to our feet like the couple before us did. And Paul follows close behind. I am trembling as we follow the city hall employee down a hallway until we reach the chapel, which really is more like a conference room. Although there is a podium at the front. When I was a child, I always imagined I would get married in a church in front of a priest, but here in front of a judge, it's just as good. तो वो लोग उनका नंबर आता है, वो उठ के जाने लगते हैं और पॉल भी उनके क्लोज आ जाता है और वो लोग अब उस चैपल में जा रहे थे, वो जो कि कॉन्फ्रेंस रूम जैसा था। और वो बोलती है कि जब मैं छोटी थी मैं इमेजिन करती थी कि मेरी चर्च में एक प्रीस्ट के सामने शादी होगी, बट हियर इन फ्रंट ऑफ अ जज is just as good because I'm here with the men that I love. It's a standard courthouse wedding ceremony which is supposed to average no more than 2 minutes, so it wasn't like we could write our own vows or anything like that. तो ये एक कोर्ट हाउस वेडिंग थी एक तरीके की, और जहाँ पे 2 मिनट में ही हो जाता था। इनको इनकी जो भी आपके आने वाले आप जो भी प्रॉमिसेस जो भी करना चाहते हो वो लिखने का इतना टाइम नहीं था। और बट द जज एट द फ्रंट हैज़ काइंड आईज एंड ही स्माइल्स एट अस, ही टेल अस टू जॉइन हैंड्स। बट जो जज थे वो बहुत अच्छे थे, वो उनके साथ स्माइल करके देख रहे थे और वो उनको हाथ जॉइन करने के लिए बोलते हैं। यू आर शेकिंग, इनजो विस्पर्स टू मी, अ स्माइल प्लेइंग ऑन हिज लिप्स। तो वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ शेक कर रहे हैं। देन शी सेड आई एम एक्साइटेड। I am shaking, but it's not the same way I was shaking when I thought there was an intruder in my closet this morning. I'm shaking because this is the most amazing thing that has ever happened to me, although that may move to second place when our daughter is born. तो हाँ, मैं शेक कर रही थी, बट ये वो वाला नहीं था, वो डर से नहीं था जब मुझे लग रहा था कि मेरे क्लॉसेट में कोई छुप के बैठा है जो कि मुझे मारना चाहता है। और ऑल दो अब हम नए प्लेस में मूव कर जाएंगे। व्हेन आवर डॉटर इज बॉर्न, वी आर गैदर्ड हियर टुडे, द जज बिगिंस, इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ uniting in matrimony Millie Calloway and Enzo Accardi. The judge talks about how the contract of marriage is solemn and not one to enter into lightly, that we are pledging ourselves to each other for a lifetime. Enzo is nodding along with what the judge is saying, taking it all so seriously. I'm glad it's you, I think to myself. For once, I made the right decision. Do you, Galloway, the judge says, take Enzo Zaccardi to be your lawful wedding husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, or richer or poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, as long as you both shall. जज जो भी उनके रिचुअल से जो भी चीज़ें पढ़नी थी वो पढ़ रहे थे। तो वो सब पूछते हैं उससे कि तुम इनके दुख सुख में, इनके बीमार होने में, इनके हेल्दी होने में, इनके रिच होने में, पुअर होने में, सब कुछ पूछते हैं। देन शी सेड आई डू यू Enzo Accardi, he continues, takes Millie Calloway to be your lawful wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, or richer or poor, in sickness and in health, to love and to cherish, as long as you both shall live. This is not long enough, he says softly, but yes I do. The next morning we two is exchange rings, simple gold bands that we bought online after the debacle with my wedding dress this morning. I am frightened the ring won't fit my finger anymore. I hold my breath, expecting the worst.
but thankfully it slides right into the place at the bed. तो उसको लग रहा था कि जो उन्होंने वेडिंग रिंग ली थी वो उसकी ड्रेस की तरह वो भी उसको फिट नहीं होगी, बट फाइनली वो आराम से स्लाइड हो गई. यू हैव जॉइंड योर सेल्फ इन सोलमन मैट्रिमोनी, द जज सेज, कि अब आपकी शादी हो चुकी है. Love is truly the greatest gift we are given to share, and never take the other for granted. For you are destined to spend the rest of your lives joined together, and now by virtue of the authority vested in me by the state of New York as Deputy Marriage Commissioner, I now pronounce you husband and wife for life. He pauses. You may kiss. Okay, finally the good part. Enzo, my husband, leans in to give me a kiss that is very courthouse inappropriate, but I don't care. I can almost imagine the kind faced judge giving us a side eye, and for once I'm sort of glad my parents are not here witness it, but we have earned this kiss. We have earned this life together, and I will live happily even after with my husband. So finally इनकी शादी हो गई है, and हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है. एंड लास्ट जो चैप्टर बचा है वो है अबाउट इंजो. तो लेट्स स्टार्ट दैट. Millie and I are married. This is the greatest day of my life. I have had many bad days, too many count. I have watched my sister murdered. I was with both my parents and their deathbeds. There are so many days I wish to erase from my memory, but not this day. This day is perfect. Nothing will ruin it for us. तो इंजो कहता है मिली और मैं शादी कर चुके हैं और ये मेरी लाइफ का ग्रेटेस्ट डे है. उसने अपनी सिस्टर को मरते हुए देखा है, बहुत से बुरे दिन देखे हैं जो कि वो अपनी मेमोरी से मिटाना चाहता है, बट वो कहता है मैं ये दिन नहीं मिटाना चाहता क्योंकि ये हमारा लाइफ का बेस्ट डे है. मिली, माई वाइफ, इज स्टिल शेकिंग एज वी होल्ड हैंड्स लिविंग द चैपल. शी कांट स्टॉप स्माइलिंग एंड all I can think is that I want to get her home now. तो मिली अब के हाथ अभी भी शेक कर रहे हैं और वो लोग निकल रहे हैं वहाँ से. बट I'm glad I have my car because I do not want to wait for the subway. She loved the blue dress, but it takes everything I have not to rip it off her. I almost can't breathe when I think about it. What are you thinking? She says to me. Is she kidding with me? You know what I am thinking. She grins even wider. I'm sorry for what her parents did to her and for the awful things they said to me, warning me not to marry this wonderful woman because she is dangerous. They said such terrible things. I will never ever repeat those words to my wife for the rest of our lives. तो उसको बहुत बुरा लग रहा था जो भी उसके पेरेंट्स ने बोला. वो चाहते थे उससे शादी ना करे, वो एक बहुत डेंजरस वुमेन है, ये सब चीज़ें. बट मैं इसके सामने कभी भी ये बातें पूरी ज़िंदगी नहीं लाना चाहता. मैं नहीं चाहता ये बातें आएँ. Millie will hurt you. She can't control herself. She will cost you your life someday. तो उसको बोलते हैं मिली तुम्हें मार देगी, तुम्हें कभी भी तुम्हारी लाइफ को कभी भी तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकती है. So Millie squeezes my hand. Should we go home? Something catches my attention at the side of the room. My eyes snap for a split second, but before she can notice, I focus my gaze back on the Millie. I need to pretend I did not see what I just saw, but I also need to take care of it. This is more urgent than anything we will do in the bedroom. There is lifetime for that. Just a minute, I tell her. I need to use the bathroom. Millie says she needs to do the same. So we part ways. I disappear into the men's room, which is small and seems empty, except for a thin man in his 40s with dark brown hair, wearing a t-shirt and jeans, who is using the. तो वो बोलती है कि चलते हैं घर, बट इंजो बोलता है कि ठीक है रुको. इंजो को कुछ दिखता है, बट वो इंजो कुछ नोटिस कर साइड रूम में, बट वो उसको इग्नोर कर देता है. वो नहीं कुछ बोलता मिली को. उसको बोलता है कि रुको मुझे वॉशरूम जाना है. तो मिली बोलती है मुझे भी जाना है. तो वो अपने वॉशरूम चले जाते हैं.
और वो बताता है कि वो वॉशरूम बहुत छोटा है, वहाँ पे कोई नहीं है, एक आदमी है पतला सा जो कि टी शर्ट एंड जीन्स पहना हुआ है, वो अपने 40s में होगा. Very quickly, I check under all these stalls, but I do not see sign that anyone else is in here. We are alone, this man and me. So I return to this restroom door and then turn the lock. The thin man zip up his fly and washes his hand at the sink. I allow him a moment to finish rinsing off the soap before I come up behind him, grabbing him by the collar with my left fist. I then slam him against the bathroom wall so hard that his head makes a resounding clunk. तो वो बोलता है कि मैंने उस आदमी को हाथ धोने दिए, उसने जिप अप किया, मैंने उसको हाथ धोने का टाइम दिया जब तक उसने डोर लॉक करा, और बोल रही कि उसने उसको बहुत ही तेज़ बहुत तेज़ उसने बाथरूम वॉल पे उसको करके मारा. The man's brown eyes widen with surprise and fear. He tries to claw at my hand holding his collar, but it is said attempt. This man has no chance of losing my grip. I will not release him until I am done. तो वो आदमी भी कोशिश कर रहा था, वो चाह रहा था उसका हाथ हटा ले, बट मैं इसको बिल्कुल भी वो कोशिश की वो नहीं होने दूंगा. What are you doing?